tectonic plate is according to size plate. So, what are the two types as per size? Have two types, triplets, and minor ones, minor. So, major plates and minor plates. Now, I told you that we have identified how many major plates? 7 major plates are there. Most of plates are named according to the continent will exist, and one oceanic big plate is there, the Pacific. Rest of plates are based on the continent, and those are, if you know now. So, just for sake of revision, first was Pacific plate. First was Pacific, that is the largest plate, isn't Pacific plate. So, if you see the Pacific plate regime, so you can see there is America and left of North America. As you all along this, now on globe, get this. So, this entire plate now visible. One side is continent there, okay. So, this side we have Asia, isn't it? This side we have, and below you have South America, and this entire is what? Pacific Ocean, and below this what you have the Pacific, is the largest plate part. Fine. Similarly, North American plate, African plate, South American plate, European plate, Australian plate, and finally Antarctic plates. So, these were 7 major plates which we have done yesterday. Now, to revise the minor plates quickly, yes, where are the minor plates? But two along this continent. Now, I am just drawing and you have to identify these plates. You able to do or no? We have one minor plate here, then we have another minor plate here. This is a zone of which call this Central American countries. How many countries you will find here? 7 countries. 7 countries are called Central American countries. And the background of this, we have a plate. What was that? Cocos. This was Juan de Fuca. Juan, it again. Want you name these plates quite oftenly that the your finger. So, number 1 we Juan de Fuca, number 2 Cocos, and number 3 was Nazca. Where Nazca was? The background of which continent? South America. Take South.
ask you for Najka, I am sure you will be drawing in this manner. So, was which plate beta? Now, can you tell me by your common sense, if I ask you, Najka is a continental plate or oceanic plate? If I ask you this, that Najka visible here on the board is continental plate or oceanic plate? So, below ocean it is oceanic, below continent it is continent. So, Najka is which type of plate? So, oceanic plate. Remember, we are going to Najka, fine. Okay. Now, we have here another plate. What was that? Kotia plate. So, here it was, yeah, here it was Kotia. So, Kotia plate and one more. So, above here Gulf of was a plate, was one Caribbean, this was Caribbean plate. So, 5 minor plates we have identified which created or attached to big continent and south. Quick revision, top one was Juan de Fuca, then we have Coast, then Najka, then we have Kotia, then we have Caribbean. Two more small plates I told you, one was Arabian plate, the other was Philippines plate, Arabian plates and Philippines plate. So, these were minor, fine. So, this is what is geometrical part of theory of plate. If I say theory of, if I write theory of plate tectonics, theory of plate tectonics. So, this will have two parts. First is geometrical part, is dynamic part. Dynamic. So, geometric part means this will tell you shape of the plates, name of the plates, these things. And dynamic part means will be plate. So, this we are going to plate. Next title, plate movement. Plate movement. Let us learn plate movement. One thing is very clear. If I ask you in one line what is the concept of plate, so will be your answer. Plate. What is the concept of plate? This plate is segment of what? Lithosphere. It is small piece of lithosphere, but which piece, from the top or right from the, it is from inside. The internal part of lithosphere is, there are several segments. Segment 1 is fine. So, this is it. Now, plate movement. Let us do movement. Plate move. What all movement of plate is, we are going to learn. See, if I have a water tub and I fill this with water, this is a tub, call this tub, and I am filling it with water. Just try to derive a concept from this
simple example. And suppose I place some wooden blocks here. I place some wooden blocks, will be floating, yes or no? Floating are, these are floating blocks because wood is lighter, below water is, it floats on water. Now, can these wooden blocks roam around water? Can they move? Can move. If I slightly push them, so they may. So, there is possibility that these two plates will come towards each other. There are possibilities that plates may towards each other. When they are moving towards each other, which type of motion we called? We call this converging blocks, and the motion is convergent. This motion is what? Convergent. Two blocks are moving towards. There is another possibility that this may move this side. So, which type of motion? Converging. So, either the two blocks will diverge or the two blocks will, they are the floating blocks. Now, tell me, do you find any similarity between thermospheric medium? So, for plates are floating, we can say plates are floating on what? Suppose this is minor plate. So, below we have which ionosphere? So, the semi liquid and liquid. We can consider this, suppose this is a liquid medium. So, on liquid medium, plates are floating or not? Actually, this is lighter and this is heavier, denser. Ionospheric rocks are, and what is find here? You find here magma, all molten rocks. Here magma. So, similar to these wooden blocks, the plates are also floating over ionosphere. Since they are floating over ionosphere, they can perform such movements, divergence, convergence, isn't it? Can perform such movements obviously. But what is the main difference between these blocks and the plates? They are independent blocks. They are free from top to bottom. But here what is this? Joined, the top layer is joined. Top is what? Joined. But from within it is crack. That is the difference. From here it is crack, divided. But from top this is joined. So, all plates from top joined, but you can see here these are independent blocks. Right? So, how many then different movement will be undergoing? So, it is very simple. See, join your hands like this and keep your elbows open, right. So, it is joined. Now, how many movements you can do like this? It will go away or it will come towards each other, and the another will be like this.
So, this is what is transform. In transform movement, the plates will collide sideways, none of these will be moving away, this will just collide like this, huh? Will collide like this, huh? But they will be either convergent or divergent. So, convergent, divergent or transform movements of plate are possible. Can we write now? Start writing the plate movement. The first point, plates are floating over, plates are floating over ionosphere. Ionosphere. Hence, can perform the following movement. Hence, can perform the following movements. First, the two, they may move towards, yes, they may move towards each other. The two plates may move away from each other. Two plates may move away from each other. And the third, which you, what beta? They can laterally collide. They can have this sort of, without separation, they will keep doing the lateral collision. Lateral collision. Fine? Okay. So, let us name these. What was the first move? Was convergent, have convergent plate move. Then we divergence plate movement. Then we transform plate movement. Transform. For this, transform, yes. Always remember that plates are broken part of lithosphere from below, not from top. From, you got this? The three types of. Now, what if the plates are going to interact with each other? The interaction could be, they may collide while converging, they may reach like this and collide, isn't it? They may reach and collide. The collision may be possible, or divergence is there, they are moving away. So, the outcome of such move are beyond expectations. Was not explained so many geophysical phenomena, but with the help of plate tectonic theory, all example mountain building, can explain mountain building, previously was not, then can explain the occurrence of earthquake, the occurrence of volcanoes, it with, you write, must have written there are three types of plate movements as shown in diagram. So, write further.
Because of these plate movement, because of these plate movement, because of these plate, many geophysical processes takes place. For example, mountain building, inside bracket, orogeny, mountain building, orogeny. Then occurrence of earthquakes, occurrence of volcanoes, occurrence of earthquakes, occurrence of volcanoes, etc. And also many landforms are created, due to such plate, such plate. For example, cold mountains, then trenches, oceanic trenches, or rather right, oceanic trenches, then islands and island arcs, islands and island arcs, ठीक है ना. So these are some physical features which can created because of the, ठीक है. So very important aspect of the syllabus, the theory of plate tectonic, very important aspect. And also I think this subject, if someone asks you important theory of plate, so what is plate, you now know. Then types of plate, there are two possibilities, ways to discuss the types of plate, one on the basis of size, the other on the basis of what, composition. It can be or it can be below continental, below ocean it is oceanic. You write this in plate type. Two bases is divided into bases. First is size. The basis of size we have what? What are plates? There and the plate. And then basis of composition.
on the basis of composition, it's like 1 kilo where. So we have what you will get here. The continent is continental plate, and यहाँ पे कौन होगा? And here it is plate and oceanic plate. ठीक है, कंपोजिशन के आधार पे. Got it? Let's come back. See here. Yes. So after knowing this, let's learn about what happens. Two plates. So let's see what is going. Next, we are going to learn what are all possibilities in case of interaction of two plates. So interaction of two may be converging or converging, or so whatever it is. Two converging, two converging plates. And suppose I consider one plate oceanic, other plate they are converging. To explain, we are taking a case. Okay? Now, one oceanic plate and one continental. Suppose they have this converging, they are approaching each other. This is continental plate. They are approaching each other. So after some times, what will happen? They are approaching each other. They may reach together and they may collide. So they may continent collide. Suppose ये collide कर गया, ठीक है? So there is some force which on दबा रहा है प्लेट्स को, pressing the plate. ठीक है? Got this? हाँ. अब मुझे बताओ, एक बात बताओ कि जब ये लगातार कंप्रेस करेगा बेटा, तो इट वाज हियर, इट्स लाइक दिस. देखो ये ऐसे है, फिर आया, अब ये पैक हो गया, एंड स्टिल इट इज कोलाइडिंग. अब क्या होगा? दोनों में से कोई ना कोई एक जाएगा, ऐसे जाएगा ना, राइट? अब प्रश्न है कौन
आपके पास ओशियनिक है, आपके पास कॉन्टिनेंटल है, विच विल हैव टेंडेंसी फॉर सबसिडिंग। तो जो हेवियर होगा, अधिक होगा, वो नीचे जाने की चेष्टा करेगा, दैट विल ट्राई टू मूव बीनीथ और सबसाइड। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट में आफ्टर मीटिंग, तो आफ्टर कोलिजन, the heavier plate will have tendency to subside। ये वाला समझ में आया? yes or no? This you got this? So I hope you must say yes। जो डाउट है बेटा, जो हेवी होगा वही तो लिक्विड में धंसेगा, लाइटर वाला तो फ्लोट करेगा। ठीक है बच्चों? तो इफ यू गॉट दिस, व्हाट विल हैपन? सी डायग्राम, कैन एलाबोरेट फर्दर। डायग्राम सी, situation will be like this। So after some times down, yes or no? And this will, which was this? What was this? ठीक है? Now tell me, ये जो solid ने डेड किया, ये क्या है बेसिकली? ये क्या है बेसिकली? ये कौन सा स्फीयर? बेसिकली दिस इज व्हाट? लिथोस्फीयर। तो बेसिकली इट इज लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर नहीं बेटा? अच्छा, इसके नीचे क्या होगा बच्चे? क्विकली, हाँ बच्चों, के नीचे का ये वाला पार्ट 600 किलोमीटर का ये स्ट्रिप क्या है? स्टेनोस्फीयर है नहीं? तो ये स्टेनोस्फीयर है ना? तो ये जो प्लेट है, ओशियनिक प्लेट, दिस प्लेट इज सबसाइडिंग इन विच स्फीयर? किस स्फीयर में जा रहा है? स्टेनोस्फीयर में जा रहा है नहीं? तो मुझे बताओ कि ये जैसे जैसे नीचे जाएगा प्लेट का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं? मान लो यहाँ पे 1000 डिग्री ना बेटा, यहाँ पे 2000 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 2500। तो एज यू मूव डीप इन स्टेनोस्फीयर, टेम्परेचर विल गो ऑन इंक्रीजिंग, होगा ना? अब मुझे बताओ कि इसका क्या होगा जो ऐसे स्लाइटली साइड आता जा रहा है, इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से लग रहा है, इट इज सबसाइडिंग, इसका क्या होगा? मेल्ट कर जाएगा। एब्सोल्युटली फाइन। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट मैच कर जाएगा इसे, मान लो बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट है 1800 डिग्री से, यहाँ पे जो रॉक है, किसका रॉक? ओशियनिक लिथोस्फीयर का जो रॉक है, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट 1800 डिग्री से, इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका? ओशियनिक प्लेट का, ये वाला ओशियनिक। तो यहाँ पे आके ये क्या होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर पर टिकेगा नहीं। तो जब ये मेल्ट होगा, मेल्ट तो होना ही है इसको, जो चीज़ अंदर जा रहा है इट हैज़ टू मेल्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कहाँ मेल्ट होगा? जहाँ मेल्ट होता है दैट इज कॉल्ड बेनियाफ जोन। जहाँ मेल्टिंग होगा ना बेटा, तो मेल्टिंग जोन इज कॉल्ड बेनियाफ जोन। तो मेल्टिंग जोन ऑफ फ्लोट इज कॉल्ड, मेल्टिंग जोन इज व्हाट? यस, व्हाट इज दिस? बेनियाफ जोन।
तो बेनियाफ जो लिथोस्फीयर में होगा या स्थैनोस्फीयर में होगा? स्थैनोस्फीयर। बेनियाफ जोन स्थैनोस्फीयर का, ठीक है। अब मुझे बोलो, यहाँ पे बेनियाफ जोन में अचानक से all of a sudden what will happen? The volume of lava will, the volume of magma will increase. तो वहाँ पे वो डिस्टर्ब करेगा ना इक्विलिब्रियम को। पहले मान लो 5 किलो मैग्मा था, अब 10 किलो हो गया, तो मैग्मा प्रेशर डालेगा कि नहीं? क्योंकि 5 ही किलो का जगह था, बाकी 5 किलो के लिए तो वहाँ जगह नहीं था। तो व्हाट विल हैपन? दिस हियर, व्हाट विल हैपन बेटा हियर? द वॉल्यूम ऑफ मैग्मा means molten rock will increase. बढ़ जाएगा बच्चों, yes or no? तो वॉल्यूम ऑफ मैग्मा विल इंक्रीज। अब क्या होगा? तो इसका परिणाम क्या होगा? तो परिणाम क्या होगा जानते हो? यहाँ का जो लावा है, हाँ, यहाँ का लावा, जो लावा यहाँ क्या करेगा, इधर की ओर डाल और थ्रस्ट लग, नहीं, ऊपर की ओर क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और जहां भी कमजोर होगा ना, वेयर एवर इट विल कम आउट व्हाट, यहाँ से निकल, जहाँ भी कमजोर होगा ना बेटा, कम आउट, ये लावा निकलना, ये क्या कहलाएगा? हाँ, वोल्केनो को। दिस इज हाउ वोल्केनो आर। तो वोल्केनो के लिए वी मस्ट हैव विच जोन बिलो? तो पृथ्वी पे आज की तारीख में जहाँ जहाँ बेनियाफ जो नीचे में है, वहीं ऊपर में वोल्केनोज हो रहे, ठीक है। तो if you have drawn, let us write some important aspect. First is note 1 2, then you can write, take these notes. Okay. Note 1, density of oceanic plate, density of oceanic plate is more than density of continent. So overall we can say that oceanic plate is heavier than continent. Oceanic plate is heavier than the continental plate. So oceanic is heavier, continental is lighter. ठीक है, next line, next line. Being heavier, oceanic plate a tendency for the subsidence, a tendency for the tendency for the subsidence. So whenever whenever oceanic plate and
a continental plate converge is the oceanic plate subside as shown in diagram. Next note, Benioff zone. Right? Benioff zone, the region inside cyanosphere where where oceanic lithosphere will melt down. Well, ठीक है ना? अब ये इसका रिजल्ट क्या होता है? तो रिजल्ट ऑफ मेल्टिंग so there are two aspects. मेल्टिंग का एस्पेक्ट क्या होगा बेटा? This will increase the volume of, right? Result. First point will increase the value of magma, volume of magma. Second, it will come out on the surface form of lava, नहीं volcano of ठीक है ना? अब देखो हम लोग सीखने वाले हैं. अच्छा, ये बताओ बेटा कि ये जब भी दो प्लेट से टकराएगा तो नीचे हर हाल में किसको जाना है? एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट नेवर सबसाइड्स, दे लाइटर इन. तो जब दो कॉन्टिनेंटल आपस में भिड़ेगा, जो अभी हम लोग भिड़ाएंगे, तो इसका क्या होगा? में से ना ये नीचे जाना चाहेगा ना सरफेस पे ही रहेंगे. तो दे विल कोलाइड, रिवैम्पिंग, कोलिजन, दे विल कोलाइड एंड देन बैक, देन फिर कोलिजन फिर होता है. ठीक है? तो we are going to now do different cases and what is the exact outcome of that case. So let's do different. देखो आपके पास मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट.
कन्वर्जेंट, फिर बेटा डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, डाइवर्जेंस, ठीक है। नाउ कन्वर्जेंस का अर्थ होगा कितना पॉसिबल, बस दो प्रकार, एक क्वेश्चन, अब हम लोग एक एक कर, मुझे बताइए। तो पहला हो सकता है जो हम लोग किए थे, एक ओशियन टू द कन्वर्जेंस विद अनदर कॉन्टिनेंटल, संभव है कि नहीं, अभी देख रहे थे हम लोग। दूसरा क्या हो सकता है, अब अपना बताओ, इन्हीं का परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्या एक और, अब इन दोनों से क्या चौथा कोई हो, कोई चौथा मूवमेंट बना सकते हो बेटा के अलावा, ये फाइनल है, से ज़्यादा है, से ज़्यादा, तो दीज आर द पॉसिबल। तो हम लोग डाइवर्जेंस, ये तीनों मिला है हम लोग, ऑल थ्री आर प्रेजेंट ऑन, ऑल थ्री आर, ये तीनों मोशन हम लोगों को हैं, हाँ? लेकिन का सभी तीनों डाइवर्जेंस का तीनों केवल एक, ओनली वन, यस, कौन वाला, एक ही है जो एग्जिस्ट करता है, टू टू प्लेन, ठीक है ना, टू ओशन ये हैं डाइवर्ज करते, नोटिस किया हमने, देखा है, प्रैक्टिस देखा है, बाकी अभी हमको दूसरा डाइवर्जेंस क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट या ओशियानिक कॉन्टिनेंट, लेकिन ये सब मिला ही नहीं है, नॉट अवेलेबल, नॉट, एक ही केस अवेलेबल है डाइवर्जेंस का, कौन वाला बेटा, सेपरेशन ऑफ टू, तो कॉल दिस डी, एक दो तीन चार, तो वी आर आइडेंटिफाइंग द केसेस फॉर द वन, क्या, अब मुझे बताओ ये हो गया, ट्रांसफॉर्म में कितना मोशन हो सकता है बेटा, ओनली ऐसे कर रहा है तो ऐसे ही करते रहेगा, नहीं ऐसे कर रहा है तो टोटल कितने प्लेट मूवमेंट हैं जिसको आप 5, so we have one, let me again highlight it, so this is 1 2 3 4, this is what beta, 5, फाइव, चलिए वन बाय वन करते, तो वन बाय वन, तो फर्स्ट केस वन,
कौन सा केस है बेटा? ओशियनिक कॉन्टिनेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है। देखिए, जब जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर मूव करेंगे, जब दो प्लेट एक ओर मूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं लिथोस्फीयर में एक पॉइंट होगा जिस पर लगातार प्रेशर पड़ता रहेगा। देखो, अर्थक्वेक, साइड नोट में थोड़ा सा साइड नोट में अर्थक्वेक का ये अर्थ है, अंदर में जहाँ जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है अंदर, उसको बोलते हैं फोकस। तो क्या बोलते हैं? फोकस, सिस्मिक फोकस, जहाँ से एनर्जी रिलीज हो, सिस्मिक फोकस, ठीक है। और ठीक इसके ऊपर का ये अर्थ का सरफेस, और इसके ऊपर का ये जो पॉइंट वाला, ठीक इसके ऊपर ग्राउंड पे फोकस के ऊपर वाला होता है सेंटर, और जहां से एनर्जी निकल रही है वो कौन सा पॉइंट होगा? फोकस, सिस्मिक फोकस। और धरातल पे, टॉप लेवल पे जो पॉइंट होगा धरातल के ऊपर, वो कौन सा होगा? एपिसेंटर। एंड एपिसेंटर ठीक किसके ऊपर होगा? फोकस के। तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। आप समझ रहे हैं बेटा? तो ये एपिसेंटर है, ये क्या है? फोकस है। ये बनता कैसे? मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग, इस पे हम लगातार प्रेशर दें तो क्या होगा? स्प्रिंग को दो बल से प्रेस कर दें तो क्या होगा बताइए? कंप्रेस हो जाएगा। यूं ही ये कंप्रेस होगा तो इसमें एनर्जी आ गई कि? तो एनर्जी स्टोर हो गई। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग को जब छोड़ेंगे तो क्या होगा? बाउंस बैक करेगा। एनर्जी क्या करेगा? बाउंस बैक। तो यहाँ पे इस स्प्रिंग में कोई एनर्जी था? नो एनर्जी। लेकिन यहाँ स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड। स्प्रिंग की तरह ही तुम्हारा फोकस ये अर्थक्वेक काम करता है। तो द अर्थक्वेक has similar principle than that of spring. See, यहाँ पे प्लेट है ऐसे, दो प्लेट, प्लेट वन, दिस इज प्लेट कोलाइडिंग, ठीक है, हिट करेगा, कोलाइड करेगा, तो किसी भी एक पॉइंट पे, जरूरी नहीं है कि कहीं भी हो, यहाँ पे शॉर्ट हो गया था ना, यहाँ पे स्टोर, एंड यू विल गेट व्हाट, ठीक है। और आने वाले दिन में कभी भी यहाँ पंप हो सकता। आपने एक्सरसाइज किया है ना, दबा के वाला होता है, या उसको जो चेस्ट होता है, आप उसको लगातार कितना देर तक पकड़े रखते? किस समय? उसके बाद आपका लिमिट नहीं रह सकता है और आप उसको अचानक से छोड़ देते हैं। तो यही होता है भूकंप में। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, earthquake, earthquake. So the rock has a limit till it can hold. Once you cross the limit, they will not able to hold the, and that energy is released at massive scale, and it has capacity to shake the entire lithosphere. This is what is earth.
is earth. Earthquake is similar to spring. मुझे बताओ, जब भी दो प्लेट टकराएगा तो यहाँ पे कहीं भी इस गोला वाले सर्कल्स में is there any chances for development of focus? हाँ, why not? Because ये फोर्स है, इधर से फोर्स है, कहीं भी बन सकता है ऐसा पॉइंट जहाँ एनर्जी विल कीप ऑन accumulating, keep on storing, and after attaining a limit it will bounce back, and this is what we call earthquake. So earthquake is just similar to the spring, both has same way to acquire. नहीं, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जब हम लोग ये कर रहे थे, यहाँ पे ये प्लेट इधर की ओर मूव कर रहा है, ये प्लेट, कैन इमेजिन द फोर्स विच इज पुशिंग दीज प्लेट्स, तो इन से फोकाई बन सकता है. प्लेट का सब इज एक्टिव सिस्मिक, सिस्मिक, तो वोल्केनो तो आएगा ही आएगा, और भी क्या आएगा, है ना. ये बात समझ, प्लेट मूवमेंट के साथ साथ अर्थक्वेक का फोकस भी बनता है, और जब उसमें सफिशिएंट एनर्जी आ गया तो एक मिनट के बाद कर देता है, रिलीज किया हम लोग. ठीक है भाई, चलिए अब इन सब कुछ करके तो गो बैक. वाला जो केस था, टॉक ऑफ दैट ओनली. तो व्हाट वाज दैट, पर ओशियानिक कॉन्टिनेंटल ओशियानिक. चलिए, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये कोलिजन के बाद ये क्या के साइड करेगा, यस और नो. और देखिए मजेदार बात, ये कॉन्टिनेंट प्लेट है, इस तरह से यहाँ पे क्या है बेटा, ये वाला जो लाइन से बना, ये डॉटेड लाइन क्या है, ये ओशियानिक प्लेट है, ये वाटर है, ये ओशन है, क्या बेटा, ओशन है. अब देखो बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन प्लेट्स में, तो इतना ज़्यादा कंप्रेशन होता है कि इसके ना वेस्टर्न मार्जिन पे यू गेट फोल्डिंग हो जाता है, फोल्ड माउंटेन्स बन गया. ठीक है, यहाँ पे जो किनारे का समुद्र होगा ये गहरा होगा या छिछला होगा बेटा, यहाँ है, ऐसे तो समुद्र का किनारा स्मूथ होता है और दूर तक चले जाओगे तो 1 फीट पानी होगा, लेकिन आप यहाँ पे खड़े हैं और सोचिए कि आप इधर वॉक करना शुरू, तो हाँ? तो जहाँ टुप हो गया समुद्र में किनारे पे, ये वहाँ क्या हुआ है, कन्वर्जेंस हुआ है, कन्वर्जेंस ऑफ ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंट हुआ है. एंड द वेस्टर्न मार्जिन पे क्या मिलेगा बेटा, कोल्ड माउंटेन,
you will be moving in, this is called trench. क्या बोलते हैं? यानी हाँ, कोस्टल ट्रेंच, कोस्ट पे ही ट्रेंच होगी, कोस्टल ट्रेंच, कोस्टल। ठीक है, यहाँ पे देखो, चलियो अब यहाँ पे जरा आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये कौन सा प्लेट था, जरा देखना, बताते जाओ। नहीं, यहाँ पे ये वाला को घेरता हुआ ये कौन सा प्लेट, ये कौन सा प्लेट है? साउथ अमेरिकन प्लेट, कैसा है? साउथ अमेरिकन प्लेट वन बेटा, एंड दैट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट। कैसा प्लेट है? कॉन्टिनेंटल प्लेट। यहाँ पे अटैच है ये कौन सा प्लेट? आज का है, यहाँ पे कौन सा है? क्या है? और इसके सहारे ये अंदर गया हुआ, आज का इधर से जा रहा है और साउथ अमेरिका इधर से जा रहा है, नहीं? तो यहाँ से वहाँ तक तुमको टेंस बन गया। ये इंडीज देखो, यहाँ से अभी आपको बताए थे ना, तुरंत आप देखे थे, किनारे पे कौन सा चीज बनता है? किनारे पे किनारे कोल्ड माउंटेन है, यस और नो? क्या यहाँ पे किस रूप में? तो द सेम यू विल फाइंड हियर, यहाँ पे प्लेट आज का ओशियानिक है ना, ये कौन सा प्लेट है? साउथ अमेरिका। बीच में क्या होना चाहिए? होना चाहिए ना, है कि नहीं? तो वेस्टर्न मार्जिन पे कॉन्टिनेंट के जनरल विकेट फोल्ड माउंट, और यहाँ पे ये फोल्ड माउंट कहलाता है। तो इंडीज, ये वाला इंडीज है ना बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक इंडीज, इंडीज के नीचे का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसके नीचे गहराई में ये वाला है कि नहीं है बेटा? पे इंडीज है ऊपर में, यहाँ पे क्या है? ये क्या है यहाँ पे? पंजाब जोन, पंजाब जोन में लावा पिघलेगा, गल के फिर लावा यहाँ से इंडीज में वोल्केनो होना चाहिए कि नहीं? खूब है, कोटोपैक्सी चिम्बराजो जो किए थे, पिक्स कांकागुआ, ओजेस डे सलाडो, जितने भी पिक्स हैं इंडीज में सारे कैसे हैं? वोल्केनिक पिक। सारे कैसे पिक हैं, तो बताओ कि ये जो रीजन है यहाँ पे, ये वाला रीजन, क्या यहाँ पे अर्थक्वेक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे में फोकस करने की पॉसिबिलिटी, तो entire Andes is a seismic prone zone, entire Andes is volcanic active zone. अब बताओ, so can you see and visualize these aspects? दिख रहा है आपको हुआ या नहीं दिख रहा है? So let's jot down these our
First, you draw this. Draw this. जब ये हो जाएगा तो आप यहाँ आप जोन बनाइए मेल्टिंग और यहाँ वोल्केनो का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा बेटा? कहाँ से होगा? तुम ऑलमोस्ट 99% वोल्केनो का लावा है, वो उसका स्रोत कहाँ पे? उसका स्रोत okay. So can you write? Because of oceanic continental collision, because of oceanic continental following geomorphic processes takes place. Number one. Number one, creation of cold mountain in the coastal region. Okay. Number two, seismic and occurrence of seismic volcanic activity. And finally, तो लिखेंगे next following landforms are yes following landforms are created. Number one, coastal range, coastal range. Number two, volcanic peaks, volcanic peaks. है ना, क्या लिखा? वोल्केनिक बेटा, हाँ, तो ये होगा लैंडफॉर्म्स में इंपॉर्टेंट. हाँ, थर्ड इज कोल्ड माउंटेन, कोल्ड माउंटेन्स बनेगा ही बनेगा ना. एंड एग्जाम्पल टू कोट
एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा माउंटेन्स? ये कहलाता है कौन? रॉकी माउंट, क्या बोलते हैं? अब मुझे बताओ, यहाँ पे तो काम किया किन दो प्लेटों ने? विच टू प्लेट्स वेर एक्टिव हियर एंड साउथ अमेरिका? यहाँ पे आप आग लगा के बताओ। ये तो बताओ बेटा, 24 से नहीं, भी फ्लेट चाहिए तभी ना फोर्स करेगा। तो पैसिफिक, तो ये वाला कौन सा? तो बनाइए और फिर आपको देखो, लोगों ने आज अंडीज बना लिया, हम रॉकीज जल्दी ही हिमालय बनाने, हिमालय से शुरू। चलिए भाई, तो आई एम श्योर दिस केस इज नाउ वेरी क्लियर ऑल। टेबल आज की तारीख इज क्विक है, नो है, इज बना हुआ खुद है। ऑल दिस बिकॉज ऑफ सब्सिडेंस ऑफ नाजिका beneath साउथ, ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ साउथ अमेरिका, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ साउथ अमेरिका, तो which is most which is more disturbed geomorphologically? क्यों वेस्टर्न वाला? प्लेट एक्टिव, प्लेट एक्टिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी से आपको और एक्सप्लेन, आप देखिए, अब ये देखिए, तो ये पूरा वेस्टर्न मार्जिन नॉर्थ अमेरिका का ले लें, पूरा वेस्टर्न का ले लें, तो यहाँ पे वोल्केनोज है कि नहीं? यहाँ पे अर्थक्वेक है कि नहीं? नहीं, इसी तरह से ले लें हम, अगर इसी तरह से हम यहाँ पे ले लें कोस्टल, तो वोल्केनोज है,
और यहाँ पे अर्थक्वेक्स है, अर्थक्वेक्स प्लेट एक्टिव जोन है, एक्टिव जोन होगा। और अब मुझे बताओ बेटा, ऊपर से लेके ये नीचे ये था क्या, इस सागर का विच बैंक ऑफ दिस वॉर पैसिफिक, नहीं तो आधा तो इधर हो गया और हाफ इसका किधर की ओर, क्या की ओर है, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, यानी यहाँ भी अर्थक्वेक्स है और क्या है, तो ये जो पैसिफिक में यदि हम खड़े हो जाएं, आई स्टैंड इन, if I am standing here, if I am what I will see, what I will see, my left here to here it is, so no, earthquakes, this side also earthquake is there, this is called circumquick of fire. अब निकालिए, just take out your phone, Google में, go to the Google and type this of fire, see the beautiful image, type, just type this, of fire. Out